traveling after 6 or 7 months. The last time I returned from Dubai in March, and that was my last trip abroad. So we have done first 2 steps of this entire big process. काफ़ी लंबा process है, मतलब आप खुद imagine कर सकते हो when they are calling you 6 hours before your flight, तो क्या क्या करवाते होंगे. But I found a very good hack and I'll share it with you guys as well if you want to save some time. Clips जो previously दिखाएंगे उसमें देखा होगा आपने बहुत सारी भीड़ होती है सैम्पल कलेक्शन में, और उससे पहले RT-PCR रजिस्ट्रेशन में भी it takes lot of time. मतलब इतनी लंबी लाइन थी. But what we did was we took porter service just in front of gate 3 or 4. Like as soon as you arrive at terminal 3, you'll see the porter service. It's called Always. Yeah, it's called Always. So you'll see their porter service. Those guys are dressed in purple t-shirt. So you reach out to them, they'll charge you like 300 per person, and what they do is like आपको वो ले जाएंगे and directly entry मिल जाती है, registration हो जाता है, they get your registration done by themselves, and then directly take you to the sample collection line. So it saved so much time for us, which was great. So highly recommend this hack if you want to save some time. अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमने एंट्री कर ली है, बट यहाँ पे हम अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं. The line again is huge. These guys take like 1 hour 10 minutes to give the report. So I'm again waiting for this porter guy to ask for our report so that it saves us some time. But बाकी process मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, because I have been reading and watching so many YouTube videos of so many famous vloggers. मुंबई का निखिल का देखा था, शहनाज ट्रेजरी का देखा था. These guys were actually complaining that about the US visa on arrival. So there is this policy, travel policy. If you have a US business or tourist visa, then you can get visa on arrival in UAE. So these guys booked their tickets and just came because they had the US visa, but they were denied boarding. So they had to return back and book flights again, and it's a lot of hassle. So there are a lot of new rules which these guys have made. So you have to be very aware about what's happening. I think these rules are being made by the airlines itself, not the authorities. A lot of rules too are being made by these airlines, and if you check on this embassy site of UAE, you won't see such rules. But better to call your airline, make sure that all your requirements are fulfilled on time, and make sure that you have all the documents, and you basically satisfy all the criteria of the airline in which you are traveling. So like we are traveling today with Air Arabia, and they had a lot of weird requirements, so we made sure to fulfill all of those. So fingers crossed for our check-in. As I mentioned, there were a lot of hassles with Air Arabia as well, a lot of weird rules and policies. हमारे साथ भी ये केस हुआ था because we are traveling somewhere else after UAE,
and these guys, my husband called them and he asked like what are the requirements, and they told this and this and this and this, and then they mentioned that you need to have return ticket from UAE to India, and we were like, but we are traveling to somewhere else, and then from there we have our ticket back to India. They were like, no, that doesn't matter, and you need to have a ticket back from UAE to India, which was insane. Then I called them again and I said, what exactly is this? Because if we are not traveling back to India directly from UAE, how do you expect us to have the tickets for that? And they were like, then if you want to take risk, then you can, but I'm just warning you that this is our policy and you won't be allowed to board the flight, which was crazy. I mean, it's just wasting money. फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. What if like we have so many things planned and booked everything in advance? इतने सारे पैसे waste हो जाएंगे. So then we booked like the cheapest ticket which we got in Indigo, just to show these guys that to fulfill their crazy requirement that we are traveling back from UAE to India. एक सस्ती टिकट कराई है, obviously partially refundable, so वो पैसा तो हमारा waste हो गया, right? प्लस देन उसके बाद हमने उन्हें ईमेल भी लिखा था, एंड देन आई टोल्ड देम दैट दिस साउंड्स इलीगल बिकॉज UAE एम्बेसी की जो वेबसाइट है उस पर इस तरीके का कोई नॉर्म नहीं है. देन हाउ कैन यू अप्लाई दिस? देन आफ्टर लाइक 1 or 2 days they came back and said that okay, you can travel with the ticket of your onward journey and we'll allow you that. And by that time we had already booked our Indigo tickets because these guys, you know, pressurized us. So beware of all the rules that these airlines are cooking up, okay? And I'll keep you posted about rest of the process. Bye. Surprisingly result काफ़ी जल्दी मिल गया. मतलब make sure कि 1 hour 10 minutes में you reach the counter, और लाइन काफ़ी जल्दी मूव हो रही थी तो काफ़ी जल्दी मिल गया रिपोर्ट. अभी हम एयर अरेबिया के चेक इन के लिए आ गए हैं. काफ़ी कम भीड़ है, which is good. So let's see. जितना हम डर रहे थे सबके व्लॉग्स और वीडियोस देख के कि एयरलाइंस के बहुत सारे रूल्स हैं, और जैसा कि हमारा एयर अरेबिया के साथ खुद का भी एक्सपीरियंस था व्हेन वी कॉल्ड देम फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, बट चेक इन काफ़ी स्मूथ हुआ. मे बी बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड, वी हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद अस, सो काफ़ी कम टाइम में हो गया. हार्डली टुक अस लाइक 10 minutes, और शायद भीड़ भी नहीं है अभी उतनी कंपैरेटिवली. आई डू सी अ लॉट ऑफ क्राउड in the immigration line, but still expected से काफ़ी जल्दी हो गया. Okay, so we are done with everything. check in हो गया. इमिग्रेशन पे भीड़ थी, बट एज़ यूजुअल जितना टाइम लगता है उतना ही लगा. सिक्योरिटी वाज फाइन एज वेल, एंड काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो गया एज़ कम्पेयर टू ऑल द वीडियोज़ विच वी वर सीइंग पीपल हैविंग सो मच ट्रबल्स. सो फाइनली वी आर रिलैक्सिंग, गेटिंग आवर कॉफ़ीज़ एंड रेडी टू बोर्ड आवर फ्लाइट. सो सी यू एट द शारजा एयरपोर्ट. बाय. द शारजा एयरपोर्ट, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी अपना रैपिड टेस्ट, कोविड RT-PCR टेस्ट 48 आवर्स पहले जो हमने कराया था वोट करने के लिए, एंड लोकल नंबर. सो लोकल कॉन्टैक्ट नंबर, वी हैव अ रिलेटिव हियर, हम उनका नंबर देंगे. सो ऑल दीज वी हैव टू कीप इन हैंडी. आगे जाके पूछेंगे. लाइन तो काफ़ी है. आई आस्क्ड अबाउट द एक्सप्रेस सर्विस, जो कि फास्ट ट्रैक सर्विस होती है एयरपोर्ट्स पे, जो कि कुछ पैसे लेके जल्दी लाइंस ब्रेक करा के आगे काम करा देते हैं. बट टुडे इट्स नॉट अवेलेबल, सो वी हैव टू स्टे हेयर इन दिस लाइन एंड गेट आवर वर्क डन.
लाइन तो है काफ़ी ज़्यादा, बट लेट्स सी हाउ क्विकली दे आर डूइंग। The Sharjah airport for immigration. Before this, we had gone to a test center for our COVID test. और फाइनली हम शारजा एयरपोर्ट पहुंच गए। प्रोसेस काफ़ी आसान था। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं जैसे ही हम लैंड हुए आई वॉज सर्चिंग फॉर द मीट एंड ग्रीट फैसिलिटी, क्योंकि उससे लाइन ब्रेक करके आप काफ़ी पैसे देके काफ़ी जल्दी काम करा सकते हो। बट आज वो सर्विस चल ही नहीं रही थी बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। सो दीज गाइज वर सेइंग कि ऐसे ही आपका काम जल्दी हो जाएगा, सो यू डोंट नीड टू ऑप्ट फॉर दैट सर्विस। सो फाइनली इमिग्रेशन में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा एंड काफ़ी एक्साइटिंग था यहाँ पे बिकॉज Expo 2020 is gonna start from 1st October onwards. So काफ़ी ज़्यादा हाइप था। एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं इस टाइम। So it's very good and exciting. And overall, I think the process was very smooth as compared to what I heard from other people. Before I sign off, I'll let you guys know that I have mentioned all the documents required for traveling to UAE in the description box below. And yes, make sure when if you haven't got your 2 COVID doses, make sure अगर आपको दोनों कोविड की डोजेस नहीं लगी हैं, then you should travel to Dubai. And if you have got both your vaccines, then you can visit to Sharjah. So yes, that was one of my tips. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next vlog. Bye bye.